Absolutely, absolutely, Arzu. Again, as you pointed out very correctly, we're lucky that, it was not a bad earthquake. It was a 4 magnitude earthquake that struck the national capital. It happened at 5:36 a.m. in the morning, and of course, a lot of people must have woken up by the tremors, perhaps did not know what to do. A lot of people, of course, as we see on our screens, rushed out of their homes. But the fact of the matter is that on social media, people were really scared. That's what they've put out. Is that reflective of the fact that people are perhaps not ready for an earthquake or don't know what to do in those scenarios? Well, Sabri, yes, but the people are much more aware than before, because there are a lot of, the posts that is being made by the IMD, by the seismology department, and also by the Delhi police, what to do and what not to do in the time of the, earthquake situation. So people, yes, they have suddenly woke up and they felt that strong Absolutely. tremors. Also, stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Ms. Joyita Basu, editor of the Sunday Guardian. Ma'am, thank you so much for taking our time and speaking to us. Again, it was a 4-point magnitude earthquake that hit Delhi first thing in the morning at 5:36 a.m. A lot of people woke up. They were scared. And again, as I was saying, netizens have taken to social media to share their experience of how they were worried. Is that reflective of the fact that we need to be more prepared for an earthquake if it were to happen? Well, the thing is, you see, first of all, there needs to be better knowledge in terms of what to do when an earthquake strikes. The thing is that, the problem with this country, and in fact with Delhi also, is that, especially in NCR, all these high rises and all, people who live on the 18th floor, but they decide to come downstairs. It takes them 10 minutes to come downstairs by walking downstairs, because one should not take the lift, but instead, perhaps they should be hiding under a table, standing under a pillar. I think this kind of basic knowledge is necessary. And but at the same time, let's not say it's only Indians who are worried. The whole world is worried about earthquakes, you see, because this is something till date no one has been able to predict an earthquake. And if an earthquake could be predicted, preventive measures could have been taken, but sadly, that is not possible as yet. But at the same time, especially these, cities and urban conglomerates which are in certain seismic zones. Apparently, Delhi is something like seismic zone 4, which may not be very high, but it's not that. It is not. There is always an element of worry. We need to construct our houses in a manner. They have to be earthquake proofed. Japan is very high on the scale of a seismic zone, and one of the reasons why, whenever a major earthquake strikes, there is very little loss of life and built property. That is primarily because their houses are built like that, built to withstand earthquakes and all. Now, I think we need to be, of course, we are told, the high rises in particular, that the high rises have been built as earthquake proof on that. But at the same time, I think it matters. All buildings, whether they may be a ground floor, 1, 2 floor, or maybe a 20-floor building, I think this should become mandatory. Yeah. That earthquake proofing them should become mandatory. Absolutely, ma'am. With that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing our perspectives with our viewers. On that note, my colleague Mehendi Garg has filed a ground report. Take a listen. सुबह सुबह 5:36 का समय था और दिल्ली में एक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। धौला कुआं जो था वो एपिसेंटर था और उसके बाद पूरी दिल्ली जो है और पूरी दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। हालांकि अगर मेट्रो सर्विसेज की बात की जाए तो कोई प्रभाव मेट्रो सर्विसेज पर फिलहाल पड़ता हुआ नहीं नजर आया। उस समय पर भी कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस हुए थे कि नहीं हुए थे और किस प्रकार के झटके जो थे वो आए थे। सर, सुबह सुबह 5:36 पर एक तेज भूकंप आया था, आपको महसूस हुआ? बिल्कुल 100%। एक्चुअली मेरी वाइफ ना रसोई में खाना बना रही थी, तो उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे सारे बर्तन वगैरह सारे एकदम से ना हिल गए। तो फिर हमें बोला, तो हमने वो देखा, तो इतने बस वो कुछ सेकंड का ही था, बस इतने बोलने में इतने तो हो लिया था टाइम। बाकी काफ़ी तेज था। हाँ, बाकी काफी तेज था। आप लोग घर से बाहर भागे, इतने में रुक गया या फिर महसूस हुआ? इतने निकले, वाइफ को महसूस हुआ, उन्होंने बोला हम घर से बाहर निकले, फिर उसने, आपको पता है इतनी देर का तो टाइम होता ही नहीं है, कुछ सेकंड के लिए आता है,
तो उसी दौरान जो महसूस हुआ तो घबरा तो जाते ही हैं कि बहुत घबराहट का माहौल जो है वो दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं लोगों के मन में था, क्योंकि भूकंप के झटके जो है वो बहुत तेज बताए जा रहे हैं और रिक्टर स्केल भी 4.0 रिक्टर स्केल रहा था। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, भूकंप के झटके सुबह सुबह महसूस हुए। 5:36 पर एक तेज भूकंप जो है वो दर्ज किया गया है आज। मैडम जी, बाकी लोग तो सब जग गए थे, मैं तो सोया हुआ था, मेरे को कोई महसूस नहीं हुआ। नहीं हुआ? मेरे आपके परिवार वालों को हो पाया? वाइफ बता रही थी कि काफ़ी तेज भूकंप आया, गलियों में लोग बाहर निकल के आ गए थे और के घर से बाहर निकलो। जब तक घर से बाहर निकलने की नौबत आई तब तक ख़त्म ही हो गया था शायद वो। भूकंप तो काफ़ी तेज है, कुछ सेकंडों के लिए आया था, काफ़ी तेज झटके आए थे। जी, तो देखिए कुछ लोगों को महसूस हुआ, लेकिन कुछ लोग क्योंकि 5:36 का समय था तो गहरी नींद में भी थे, तो उन लोगों को भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। क्या आपको भूकंप महसूस हुआ था सुबह? मैम, यस हुआ था। कितनी तेज भूकंप था वो? क्या जो सामान है वो घरों का हिलने लगा था या आप लोग बाहर ही थे तब वो महसूस हुआ? क्या हुआ था? सुबह हम बेड पे थे तो ऐसे जैसे नीचे से रेल मेट्रो ट्रेन नहीं जाते, धक 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 ऐसे हुआ। इतने उठे, फिर इतने तो 2 सेकंड के था, सिर्फ 2-4 सेकंड का। तो मतलब घर से बाहर निकलने का भी समय नहीं मिल पाया था? बेड से उठने का समय नहीं मिल पाया मैम। मैंने हमारे यहाँ तो मेट्रो भी नहीं है और ऐसा लग रहा है मेट्रो नीचे से जा रहा है। इतने सोचा मेट्रो तो है ही नहीं इधर यार, तो जा चुका था। बेशक बहुत तेज जो झटके हैं वो महसूस हुए, क्योंकि लगातार जो अगर रिक्टर स्केल की भी बात की जाए तो वो 4.0 जो है वो महसूस किया गया। हालांकि अगर मेट्रो सर्विसेज की भी बात की जाए तो उन पर कोई खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन जो झटके थे वो बेशक बहुत ज्यादा तेज बताए जा रहे थे। सर, क्या आपको महसूस हुए झटके? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए लगातार जो है वो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे थे और सोशल मीडिया पर जितनी जो तस्वीरें हैं और वीडियोस हैं वो भी वायरल होती हुई फिलहाल इस भूकंप के झटके की नजर आने लगी थी। लोगों से भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सुबह सुबह ही भूकंप आया था, आपको महसूस हुआ था? हाँ जी। तो देखिए लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल 9 बज गए हैं, लेकिन 5:36 का समय था जब तेज भूकंप के झटके पूरे दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के इलाके लगते हैं, चाहे वो नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, वहां पर भी जो झटके हैं वो महसूस किए गए। कैमरा पर्सन